Hello student, good morning. Today we will learn Sanskrit chapter 3 Swasthavrutam Samacharaः. Swasthavrutam Samacharaः observes the regimens for a healthy life. Great poet Kalidas has written in the 5th canto of Kumar Sambhava that body is the first means of accomplishing duty. This means even if a man has lots of things with him, but if he has no healthy physique, all these things are useless. Man has to make many efforts to keep himself healthy. One of them is day-to-day routine. If day-to-day routine is good, health remains good. So as old learners of Ayurvedas and modern well-known scholars of medical science unanimously agree to this point. Ideal day-to-day routine of a man is presented here. This day-to-day routines does not include only the habits of eating, drinking, standing, sitting, walking, sleeping, etc., but virtues like company of good person, respect towards elders, hard working for acquiring knowledge, sticking to truth, etc., which are believed to be moral ideals of human lives. The studies of imperative forms used in the lessons and the meaning expressions by them is also expected. Generally speaking, Ayurveda has two sections, Swasthavrutam and Aturavrutam. Swasthavrutam यानी कि regimen for a healthy life and Aturavrutam यानी कि study of disease and treatment. तो यहाँ पे हमें ये चैप्टर स्वस्थवृतम समाचार यानी कि स्वस्थवृतम यानी कि रिमेजिमेंट्स फॉर अ हेल्थी लाइफ एंड आतुरवृत आतुर स्टडी ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट. Our ancient medical science gives more stress on the prevention of disease. Since body and mind are inseparables, integral whole, the instructions given in these lessons are for physical as well as mental or spiritual well-being. You must have here the proverbs sound mind in sound body, or the Sanskrit line Chite prasanne bhuvana prasannam. Meditations or remembrance of God is important because it makes our mind calm and quiet, which in turn helps our body to maintain good health. Some point maintained in the lessons like Shatam Padani Nishkram may seem irrelevant today when we are living in self-content flats. This is but nature's when we are reading ancient
book. The rules prescribed should be observed in spirit and not in letter. We learn first श्लोक. बालः उत्तिष्ठ शय्यातः स्वस्थवृतं समाचरः स्मर जगतविधातारं ततः शुद्धं जलम पीबः. तो यहाँ पे हमें दिया है शय्यात. शय्यात यानी कि बेड. उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ यानी कि गेट अप. स्वस्थवृतम हेल्थी बिहेवियर. समाचर प्रैक्टिस वेल. जगत विधातारम क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. स्मर रिमेंबर. ततः ध्यान या फिर आफ्टर ध्यान. शुद्धम जलम प्योर वाटर. पीब यानी कि ड्रिंक. तो फर्स्ट हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे. बाल उत्तिष्ठ शय्यात. चाइल्ड, ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम बेड. स्वस्थमृतं समाचरः. प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंड्यूसिव टू हेल्थ. स्मर जगत विधातारम. रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. तत शुद्ध जलम पीबः. Then drink pure water. O child, get up from bed. Practice well the behavior conducive to health. Remember the creator of the world. Then drink pure water. शतं पदानि निष्क्रम्यं शौचार्थं गच्छ सत्वरम्. फेनिकेलं करो कृत्वा शुद्धो व्यायामाचरः. शतं पदानि, शतं पदानि यानी कि 100 स्टेप. निष्क्रम्य, निष्क्रम्य यानी कि गोइंग आउट. शौचार्थम, शौचार्थम यानी कि फॉर evolution of balls. सत्वरम quickly. गच्छ go. फेनिकेनो, फेनिलेनो means कि with a soap. करो both the hands. शुद्धो कृत्वा क्लीनिंग. शुद्धो कृत्वा यानी कि क्लीनिंग. व्यायाम, व्यायाम मीन्स होता है एक्सरसाइज. आचार, आचार यानी कि डू यानी कि प्रैक्टिस. देन शतं पदानि निष्क्रयम. वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप. शौचार्थम गच्छम सत्वरम. After going out the house, go quickly for evacuations of bowls. Phenilenum karo krutva. Then washing the hands with soap. शुद्धो व्यायामाचारः. Take exercise. Walking a distance of 100 steps. After going out of the house, go quickly for evacuations of bowls. Then washing the hands with soap and take exercise. Third, यथाविधि जलेनेव. यथाविधि जलेनेव.
स्वीयं प्रधावय। पूर्वाभिमुखमासीन कुरु संध्याविधि तथा। उसमें दिया है यथाविधि जलेन काये। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड श्लोक हमारा है तैलम मर्दय काये त्वं ततो स्नानं समाचरः यथाविधि जलेनेवं वस्त्रं स्वीयं प्रधावय। काये, काये यानी कि इनटू द बॉडी। तैलम, तैलम मीन्स होता है ऑयल। नेक्स्ट दिया हुआ है मर्दय, मर्दय यानी कि रब। जलेन एव, जलेन एव यानी कि विथ वाटर ओनली। यथाविधि, यथाविधि यानी कि अकॉर्डिंग टू द मेथड। स्वीयं वस्त्रम, ऑन गारमेंट। स्वीयं वस्त्रम का मीन्स होता है ऑन गारमेंट। प्रधावय, वॉश इन द राइट मैनर। प्रधावय का मीन्स होगा वॉश इन द राइट मैनर्स। तेलो मर्दये काये त्वं, मसाज योर बॉडी विथ ऑयल। ततो स्नानो समाचर, then take bath। यथाविधि जलेनेव वॉश योर ओन गारमेंट्स। वस्त्रं स्वीयं प्रधानय in the right manners। Wash your own garment in the right manners। Massage your body with oil, then take bath। Wash your own garment in the right manners। फर्स्ट 3 श्लोक हमने देखे। अब फोर्थ श्लोक देख लेंगे। पूर्वाभिमुखमासीनं कुरु संध्याविधि तथा। वन्दस्व पितरो नित्यं प्रातराशम् आशानचः। पूर्वाभिमुखमासीन कुरु, उसमें पहले दिया है तथा। तथा यानी कि होगा सिमिलरली। पूर्वाभिमुख फेसिंग द ईस्ट। आसीनो, आसीनो मीन्स सिटिंग। संध्या विधि, संध्या विधि मीन्स मॉर्निंग प्रेयर्स। जो मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं उसे बोलते हैं यहाँ पे संध्या विधि। कुरु, कुरु यानी कि परफॉर्म। नित्यम, नित्यम यानी कि ऑलवेज। पितरो, पितरो यानी कि उसका मीन्स होता है मदर एंड फादर। पितरो यानी कि मदर एंड फादर, हमारे पेरेंट्स। वंदस्व, बो डाउन। वंदस्व मीन्स बो डाउन। प्रातोराशम, प्रातोराशनम यानी कि मॉर्निंग मील या फिर ब्रेकफास्ट। ओशानो, ओशानो यानी कि ईट। तो पूर्वाभिमुखमासीनो एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग कुरु संध्या विधि तथा। रिट्यूल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिट्यूल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट। वंदरे पितरो नित्यम, ऑलवेज बो डाउन टू द पेरेंट्स। प्रातराशनम ओशानचः एंड ईट योर मॉर्निंग मील या फिर टेक योर ब्रेकफास्ट। एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग्स फेसिंग द ईस्ट। ऑलवेज बो डाउन टू द पेरेंट्स एंड ईट योर morning meal, take your breakfast। फर्स्ट
4 श्लोकम ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार देख लेंगे। ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर conducive the health, remember the creator of the world, then drink pure water. Second slok, walking a distance of 100 steps after going out of the house, go quickly for evacuations of bowls, then washing the hands with soap and take exercise. थर्ड श्लोक का हम देखेंगे, मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट इन द राइट मैनर. फोर्थ, and also perform the morning ritual sitting facing the east. Always bow down to the parents and eat your morning meal या फिर take your breakfast. नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ, पाठशालाः समो मित्रे गच्छं पाठं तथा पठो एवं समादिशत पुत्रं तातः पुत्रहिते रतः, त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमम्, कुरु पुण्यो महोरात्रं स्मर नाम हरे सदा. प्रविचार्योत्तरं देयं सहसा न वदे क्वचितम्, शत्रोरपि गुणाग्राह्या दोषा त्यज्या गुरोरपि, ध्येयं सनातनं ब्रह्मं हेयं दुःखमनागतं, कायिकं सुखमादेयं विधेयं जनसेवनम. तो पाठशाला समो मित्रे गच्छ पाठं तथा पठम् एवं समादिशतं पुत्रं तातं पुत्रहिते रत. मित्रे समम कमीज होगा विथ फ्रेंड. पाठशालां गच्छम गो टू स्कूल. पाठम पठ लर्न योर लेसन या फिर लर्न लेसन. एवं इन दिस वे पुत्रहिते इन द वेलफेयर. रत इंग्रोस या फिर इंगेज. समादिशत इंस्ट्रक्टेड. उसका ट्रांसलेशन देखें, पाठशाला समो मित्र गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स. पाठम तथा पठम and learn lessons. एवं समादिशतं पुत्रं तात पुत्रहिते रतः. The father who was engrossed in the welfare of his son instructed him in this way. Go to school with your friends and learn lessons. The father who was engrossed in the welfare of his sons instructed him in this way. 6. त्यजम दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कुरु पुण्य महोरात्रम स्मरो नाम हरे सदा. दुर्जन संसर्ग associations with the weak. त्यज given up. साधु समागमम company of good people. भोजम prefer या फिर enjoy accept. अहोरात्रम
day and night. Ahoratram means day and night. Punyam Kuru secures religious merit. Hare Namo, the name of Hari. Smaraha, remember. इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे. त्यज दुर्जन संसर्ग, गिव अप द एसोसिएशंस विथ द विक्र. भज साधु समागमम, प्रिफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल्स. कुरु पूर्णमः रात्रम, रिमेंबर द नेम्स ऑफ हरि थ्रूट आउट डे एंड नाइट. स्मरो नाम हरे सदा, कुरु पूर्ण रात्रम, seek your religion's merit. Give up the associations with the weak. Prefers the company of good peoples. Remember the name of Hari throughout day and night. Seek your religion's merit. 7th, शत्रोरपि गुणाः ग्राह्या दोषात् त्यज्या गुरोरपि. ध्येयं सनातनं ब्रह्म हेयं दुःखं नागतम्. शत्रोरपि गुणाः प्रविचार्योत्तरं देयं सहसा न वदेक्वति. शत्रोरपि गुणाः ग्राह्या दोषा त्यजता गुरोरपि. प्रविचार्य, प्रविचार्य मीन्स होगा प्रविचार्य उत्तरम, आंसर, रिप्लाई. प्रविचार्य मीन्स गर्ड्यूस एंड उत्तर मीन्स आंसर, रिप्लाई. देयम, शुड बी गिवन. क्वचित, क्वचित न यानी कि नेवर. सहसा, सहसा यानी सडनली. न वदे, शुड नॉट टॉक. शत्रु, ऑफ द एनिमी. गुणा, वर्च्यूज, गुड पॉइंट. ग्राह्या, शुड बी एक्सेप्ट. गुरु, ऑफ द टीचर्स और एल्डरली पर्सन्स. त्यजा, should be given up, discards. प्रविचार्य देहम सहसा न वदेत क्वचितम. Answer should be given after thinking thoroughly well. Never should you speak suddenly or thoughtlessly. सहसा न वदेतो, never should you speak suddenly or thoughtlessly. Good quality should be accepted. शत्रुरपि गुणाग्राह्या दोषा त्यजता गुरुरपि. Good quality should be accepted even from the enemies, and bad quality even of the teachers should be given up. Answer should be given after thinking thoroughly well. Never should you speak suddenly or thoughtlessly. Good qualities should be accepted even from the enemies. Bad qualities even of the teachers should be given up. ध्येयं सनातनं ब्रह्म हेयं दुःखम् अनागतनम्. कायिकं सुखमादेयं विधेयं जनसेवनम्. सनातनं ब्रह्म, eternal supreme beings. Dhyayam should be meditated upon. Anagatanam, anagatanam means which has not come. Heyam should be given up. Kaikam यानी कि physicals. Adeyam should be accepted. जनसेवनम
यानी कि सर्विस ऑफ द पीपल. विधेयम शुड बी डन. ध्येय सनातन ब्रह्म हेयम. Eternal supreme being should be meditated upon. Eternal supreme being should be meditated upon. Give up sorrows that has not come, except the physical pleasures. Service should be rendered to people. Eternal supreme being should be meditated upon. Give up sorrows that has not come, except the physical pleasures, and service should be rendered to people. तो फिर से हम उसका एक बार रिवाइज कर लेंगे. इंग्लिश ट्रांसलेशन. बाल उत्तिष्ठ शय्यातः स्वस्थमृतं समाचर. O child, get up from bed. Practice well the behaviors conducing to health. Remember the creators of the world. Then drink water. सेकेंड है शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थ गच्छम सत्वरम. फेनिकेलन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाम. Walking a distance of 100 steps after going out of the house. Go quickly for evacuations of bowls. Then washing the hand with soap and take exercise. Then third श्लोक. तेलो मर्दये काये त्वं ततः स्नानं समाचरः. यथाविधि जलेनेवं वस्त्रं स्वीयं प्रधावय. तेलो मर्दये काये. Massage body with oil. Then take bath. Wash your own garment in the right manner. Fourth, पूर्वाभिमुखमासीनं कुरु संध्या विधि तथा वंदस्व पितरो नित्यं प्रातराशम आसनं च. And also perform the morning rituals sitting facing the east. Always bow down to the parents and eat your morning meal या फिर take your breakfast. फिफ्थ है पाठशाला समूह मित्रे गच्छः. पाठम तथा पठो एवं समादिशत पुत्रम तातः पुत्रहिते रतः. Go to school with your friends and learn lessons. The father who was engrossed in the welfare of his son instructed him in this way. 6. त्यज दुर्जन संसर्गभजम साधु समागमम कुरु पुण्योमहरात्रम स्मर नाम हरे सदा. Give up the associations with the weak. Prepare the company of good people. Remember the name of Hari throughout day and night. Seek your religious merit. 7th, शत्रोरपि
गुणाः ग्राह्या दोषा त्यज्या गुरोरपि ध्येयं सनातनं ब्रह्म हेयं दुःखम अनागतनम. Answer should be given after thinking thoroughly well. Never should you speak suddenly or thoughtlessly. Good qualities should be accepted even from the enemies, and bad quality even of the teachers should be given up. 8. ध्येयं सनातनं ब्रह्म हेयं दुःखम अनागतम कायिकं सुखम आदेयं विधेयं जनसेवनम. Eternal supreme being should be meditated upon. Give up sorrows that has not come. Accept the physical pleasures. Service should be rendered to peoples. तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर. उसका हमने आज यहाँ पे लर्न किया स्वस्थ वृत्त समाचार. तो उसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.